उस तो बाद गुलिस्तान शादी भी होगा। पुलिस क्वैक करनी आज, ठीक है। What is the clump of trees? A clump of trees or plants is a group of trees growing close together. What was stuck in the camel's throat? A melon stuck. A melon was stuck in the throat of the camel. What did the quack pretended to cure? The quack saw the camelman treating his camel with a blanket and a malt. He supposed the camel to the treated for its wager. What did the quack do with the old woman? He tied a blanket round her throat and hit with a malt. The old woman died. Woman मर गई बेचारी। मर गई। बड़ी जोर की नींद है। What was the result of cure? The old woman could not bear the hard hit of a mallet. She died then and there. Thus the quack's treatment resulted in her death. What was the punishment inflicted upon the quack by the villagers? They forced him to dig the grave of the woman. After this, they beat him hard and let him go. For whom did the quack dig the grave? In his effort to cure the old woman for Goicher, the quack killed her. Thus he was forced to dig her grave and bury her. अच्छा, तुम इस अगले पेज से आ गए। What did the quack do in the next village? In the next village, he again got ready to cure an old man, but he asked the villagers not to force him to dig his grave. Why did the villagers not let the old man get cured? When the villagers saw the quack talking about digging the grave, they did not allow him to cure. Why did the quack come back to the camel man? The quack thought that his way of treating nature was wrong, therefore he was returned back to the camel man to learn from them the right way of curing goicher. या ठीक है। तो अब हम लोग फिर से बात करेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर के बारे में। तो तो इसका नाम है अ माइल्ड अटैक लोकट्स। टिड्डियों का एक मामूली हमला, मतलब कि छोटा सा हमला टिड्डियों का। इसके सवाल, व्हाट आर लोकट्स? द लोकट्स आर इंसेक्ट, दे लिव मेनली इन एशिया एंड अफ्रीका। दे ईट एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। व्हाई डिड द फार्मर्स थ्रो वेट लीव्स ऑन फायर्स? They were throwing wet leaves onto the fire to produce acid and black smoke. What was the desire of every farmer? Every farmer was trying
to stop locusts from landing onto his farm. It was the desire that the locust should overlook his farm and go on to the next one. अच्छा अगला प्रश्न ला रहे हैं वाई डिड ये तो होगा डिड मार्गरेट नो व्हाट टू डू टू कीप लोकर्स अवे नो शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू टू कीप लोकर्स अवे फ्रॉम हिज फार्म ठीक है तो अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ दे वर क्लोटेड thick with insects. Their backs bent down due to the weight of insects. How did old Stephen treat the stray locusts? He picked a stray locust off his shirt and split it down with his thumbnail. It was full of eggs. Are the hoppers different from the locusts? The hoppers are the young locusts while the locusts are the fully grown insects. Did Margaret lose heart on the loss of crops? Yes, she lost her heart. She thought that the countryside was fully ruined. Why are the locusts compared with the bad weathers? Margaret thought that the locusts would had bad weather. Like a bad weather, they could appear at any moment. Why did the men eat their supper with good appetites? They had fought with locusts the whole day. They were tired and hungry, so they ate their supper with relish. तो दोस्तों ये 9th अपना चैप्टर हो गया है मुकम्मल ठीक है 10वां चैप्टर मुकम्मल हो गया अपना ठीक है 10 मिनट की वीडियो भी हो गई है तो चलते हैं फिर अपनी यार और नेक्स्ट चैप्टर पे वो कौन सा आप देखते हैं फिर आगे उसका नाम ये तो जो है ना माइल्ड अटैक ऑफ लोकर्स ठीक है एक छोटा सा चिड़ियों का हमला मामूली जो डेली बेस पे होता रहता है ठीक है ना तो उस टाइप से अच्छा आई हैव ड्रीम जो क्या है अगला चैप्टर ठीक है
तो अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं. व्हाट वाज द cause of the Negroes discontent? The Negroes were considered inferior to the white men. They were made slaves. These things created a discontent among them. अच्छा, okay. What are the qualities of the veterans of creative suffering? They are brave men. They are brave men. They think that the unearned suffering is redemptive. They fight for their rights. So what is the dream of Martin Luther King Jr.? He dreams that a day will come when people would live like brothers. The rulers would judge a man by his qualities and not by the color of his skin. What should be the faith of the Negroes? They should have the faith that unearned suffering is redemptive. अच्छा, तो यार यहाँ पे थोड़े से सवाल अगले सफ़े पे आ गए हैं. ठीक है, तो मैं फिर उसके लिए थोड़ी सी बुक को ऊपर उठा रहा हूँ. तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं हो इस चैनल पे तो. ठीक है, बाकी तो मुझे अब बहुत नींद आ रही है. कंटेंट क्रिएशन ये सबसे ज़्यादा सिंपल है जो काम मैं कर रहा हूँ. ठीक है, लेकिन वो भी अब मुझसे नहीं हो रहा. देखो मैं कितना काइंड. अरे ये मेरा किड्डा भाई, मेरी जान का छोटा भाई, किड्डा भाई, मेरा किड्डा भाई. यार जल्दी से कौन है भाई, कोई तो बोलो. चलो ये क्या, ये यहाँ पे उल्टा 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 आ रही हो. मेरे को बहुत पता चला भाई ये बुक में उल्टा है. अच्छा, तो अब यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे एक टॉपिक चल रहा है कि व्हाट was the necessity of pleading the case of the Negroes' freedom. The Negroes were treated like slaves. They could not enjoy equal rights, so it was necessary for them to plead their case of freedom. What should be the criterion of judgment for a person? A man should be judged by the qualities of his character and not by the color of his skin. Do the Negroes enjoy the liberty in all parts of their country? No, Negroes did not enjoy liberty in all parts of their country, but now they equal rights. Enjoy करना. तो यहाँ पे अपना मुझे लगता है कि 11 चैप्टर भी पूरे हो गए हैं. ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये आखिरी चैप्टर ही होगा आगे, आखिरी या फिर उससे भी आगे हो सकता है. देखने वाली बात है, मैं देखता हूँ. शॉर्ट क्वेश्चन से लो अपनी गाइड हो. गिफ्ट ऑफ मैगी मुझे लग रहा था कि आखिरी चैप्टर हो सकता है. मैंने इसको पॉइंट समझा हुआ था, लेकिन कोई ना, हम लोग इसको भी कवर करेंगे इसी वीडियो में. और नेक्स्ट वीडियो में मेरा दिल है कि उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा ना, ठीक है, पास्ट पेपर में मैं एक पेपर की रूटीन से हिसाब से हम चलेंगे. ठीक है, सारी की सारी तैयारी करेंगे. इंग्लिश की तैयारी इंशाल्लाह आज के दिन में हमने मुकम्मल करनी है.
बाकी फिर जो अगला चैप्टर होगा वो हम कल को करेंगे, ठीक है। कल से फिर थोड़ा थोड़ा करके काम हम आगे चलाएंगे। और पेपर की तैयारी इंशाल्लाह हमने 15 तारीख तक पूरी करनी है, पूरे 15 दिनों के अंदर, क्योंकि अगले जो 5 दिन होंगे फिर उसमें हमने आगे काम जो होगा ना यार वो शुरू करना है, ठीक है। हाउ मच डिड डेला सेव फॉर क्रिसमस? मनी की बात हो रही है। डेला हैड प्लान्ड टू बाय हर हस्बैंड अ गिफ्ट एट क्रिसमस। फॉर दिस purpose she had saved $1.87. Why did Della feel pride in the beauty of her hair? Della's hair looked like a falling stream of brown water. It reached below her knee. She felt pride in the beauty of her hair. Why did Della sell her hair? She did not have enough money to buy a gift for a Christmas. Thus she sold her hair to get money. ठीक है, अभी अपना दूसरा या तीसरा सवाल भी होगा, उसके बाद हम चौथे सवाल पे चलते हैं आगे जो भी है। Why did Jim sell the gold watch? Jim wanted to buy a Christmas gift for his wife, but he did not have enough money. Therefore, he sold his gold watch to get money to buy a gift for his wife. Why did they want to present the gift? They could not be happy at Christmas without giving gift to each other. It because they loved each other very much. Much they गए। Why did she feel sad about losing her hair? She had long, beautiful hair. She was sad about losing it. She feared that Jim might hate her without her hair. Why did Jim not welcome her when he stepped in? She had long, beautiful hair. She was sad. Jim could not welcome her because he was stoned to see Della without her hair. In long, beautiful hair, he had bought combs for her hair. What did Jim bring out from his coat? From the pocket of his coat, he took something out, tied in a piece of paper. They were beautiful combs for Della's. How beautiful was the gold watch chain? It was a simple chain. Its value in its rich and pure material. Its gold seemed to shine softly. What was the wisdom in selling the most valuable things? Both the lovers wanted to give gifts to each other, but both did not have any money to buy gifts. They sold their valuable things to buy gifts for each other. दोस्तों यहाँ पर अपनी स्टोरी होती है ख़त्म, ठीक है। तो अब इस कहानी का मोरल ये है कि यहाँ पे जो डेला और जिम है दोनों अगर देखा जाए तो हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है। दोनों ही क्रिसमस पे अपने लिए अपने एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के पास ही पैसे नहीं हैं। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो उनको फिर अपनी कीमती चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को एक तरफ देखने को मिलता है कि जो डेला होती है वो अपने खूबसूरत जो उसके बाल होते हैं ब्राउन, ठीक है,
जो कि एक बहती हुई स्ट्रीम फॉल की तरह लगते हैं, ठीक है। वो उनको जाके सेल करती है ताकि वो अपने हस्बैंड के लिए एक गिफ्ट ले सके, और दूसरी तरफ जो उसका हस्बैंड होता है वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। वो अपनी जो गोल्ड वॉच होती है जो उसको अपनी विरासत में मिली होती है, ठीक है, मतलब कि उसके